So, good morning, everyone, and we will begin the morning session with a short period of chanting. And are you, Dr. Dar, you're leading the chanting, and then I will give some instruction, and then we can have some period of discussion, questions and answers, and we will end the morning session with a period of meditation. So let us begin with the morning chanting. जो भगवान सम्यक संबुद्ध अरहंत साक्षातो येन भगवता धम्मो एवं भगवान के द्वारा भली भांति व्याख्यात धर्म सुपटिपन्नो यस्य भगवतो शावक संघो और भगवान के शावक संघ जो ठीक प्रकार से मार्ग पर चल रहे हैं तमयं भगवन्तं सधम्म ससंघं इमे हि सत्कारे हि यथा अरहं आरोपिते अभिपूजयामा। हम भगवान बुद्ध धर्म और संघ की यथोचित सत्कार से पूजा करते हैं। साधुनो भन्ते भगवा सुचिर परिनिभूतोऽपि पश्चिमा जनतानुकंपमानसा। हमारा सौभाग्य कि भगवान को महान निर्वाण की प्राप्ति के बाद भी आगे आने वाली पीढ़ी पर अनुकंपा थी। हिमे सत्कारे दुर्गत पन्नाकार भूते पटिगन्नातु। भगवान आदर पूर्वक दी गई हमारी तुच्छ भेंट स्वीकार करें। अम्हाकंगी हिताय सुखाय हमारे दिल का लिखित और सुख के लिए। हरिवं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। मैं भगवान सम्यक संबुद्ध का अभिवादन करता हूँ। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। भगवान के द्वारा भली भांति आख्यात धर्म को नमन करता है। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। भगवान के मार्ग को भली भांति प्रतिपादित करने वाले श्रावक संघ को नमन करता हूँ। अन्नमयं बुद्धस्य भगवतो कुलभाग नमकारं करोमि से।
आए हम भगवान बुद्ध की प्रारंभिक वंदना करें। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध को नमस्कार। अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध को नमस्कार। अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध को नमस्कार। अन्नमयं बुद्धावितुतिं करोमसे। आए हम भगवान बुद्ध की स्तुति करें। योसु तथागतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धो। वे जो तथागत अरहंत और सम्यक संबुद्ध है। विद्याचरण संपन्नो, ज्ञान और आचरण से संपन्न है। सुगतो लोकविदु, सुगत एवं लोक ज्ञाता है। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, अनुपम सारथी की भांति भटके हुए मनुष्यों को संयमित करने वाले हैं। सत्ता देव मनुष्य बुद्धो भगवान, देव और मनुष्यों के शास्त्रा भगवान बुद्ध। यो इमं लोकं सदेवक समारकं सब्रह्मकं, जिन्होंने इस श्लोक में देवों मार ब्रह्मो ससमन ब्राह्मणिं पजं सदे मनुष्यं स्वयं अभिन्यासच्चिकत् पवेदेसी। श्रमणों ब्राह्मणों देव मनुष्यों को अपने दिव्य ज्ञान से सत्य साक्षात्कार कर उसका वर्णन किया। यो धम्मं देशेऽसि आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्यवसान कल्याणं। जो उस धर्म को सिखाते हैं वो आरंभ में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंत में भी कल्याणकारी है। सातं व्यंजनं केवल परिपूर्ण परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशेसि। भगवान ने ये परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य धर्म अर्थ व्यंजन सहित प्रकाशित किया। तमहं भगवन्तं अभिपूज्य, तमहं भगवन्तं शिरसा नमामि। मैं उन भगवान की पूजा करता हूँ, उन भगवान को सिर झुकाकर नमन करता हूँ। अन्नमयं धम्मावितुतिं करोमसे। आए हम धर्म की स्तुति करें। योसु साक्षातो भगवता धम्मो, जो धर्म भगवान ने भली भांति आख्यात किया। संदिग्ध को स्पष्ट दिखाई देने वाला है। अकाली को कालातीत है। हे पस्य को अन्वेषणा को प्रोत्साहित करने वाला है। ओपनयी को अंतर्मुखी करने वाला है। पच्चतं वेदितव्यो विज्ञाहि, प्रत्येक प्रज्ञावान को व्यक्तिगत रूप से अनुभव होने वाला है। तमहं धम्मं अभिपूजयामि, उस धर्म की मैं पूजा करता हूँ। तमहं धम्मं शिरसा नमामि, उस धर्म को मैं सिर झुकाकर नमन करता हूँ। अन्नमयं संघावितुतिं करोमसे। आए अब हम संघ की स्तुति करें। योसु सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, भगवान के श्रावक संघ जो कि भली भांति मार्ग पर चल रहे हैं। युपटिपन्नो भगवतो सावक, जो सीधे मार्ग पर चल रहे हैं। न्याय प्रतिपन्नो भगवतो सावक संगो, ज्ञान पूर्वक मार्ग पर चल रहे हैं।
सामीची पटिपन्नो भगवत सावक संगो। और सही प्रकार से चल रहे हैं। यदिदं चत्तारि पुरुषयो अट्ठ सगुगला। और जो ये 4 युगल और 8 प्रकार के आर्य हैं, एस भगवत सावक संगो, ऐसे भगवान के श्रावक संघ हैं। आहुनेयो, वे भेंट देने योग्य हैं। आहुनेयो, आतिथ्य के योग्य हैं। दक्षिणेयो, दक्षिणा देने के योग्य हैं। अंजलि करणीयो, और नमस्कार के योग्य हैं। अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकस्य, और इस लोक में अतुलनीय पुण्य क्षेत्र है। तमहं संघं अभिपूजयामि, मैं उस संघ की पूजा करता हूँ। तमहं संघं शिरसा नमामि, मैं उस संघ को सिर झुकाकर नमन करता हूँ। अन्मयं रत्नतर्पणां गाथा यो चेद संवेद परिकीर्तन पाठं च बनामसे। आए अब हम कीर्तन वंदना और धर्म संवेद जगाने हेतु पाठ करें। बुद्धो सुशुद्धो करुणा महान्नवो, भगवान बुद्ध परिशुद्ध और करुणा के महासागर हैं। योचंत शुद्ध बल ज्ञान लोचनो, ज्योति शुद्ध ज्ञान के चक्षु हैं। वंदामि बुद्धं नादरेण तं, मैं भगवान बुद्ध की सादर वंदना करता हूँ। धम्मोपदीपो वियतस्य सद्गुणो, उन शास्त्रा का धर्म दीप की भांति है। यो मद्विपाकामत भेद भिन्न को, लोकुत्तरो योचत दत्त दीपनो, जो मार्ग उसके लोकोत्तर अमृत फल को प्रकाशित करने वाला है। तम् अहमादरेण तं, मैं उस धर्म की सादर वंदना करता हूँ। संघो सुखेता जाति खेत सन्नितो, भगवान का संग जो साधना हेतु फलदायक धर्म क्षेत्र है। यो विट्ठ संत सुगतानुबोधको, जिन्होंने सुगत भगवान बुद्ध के बाद शांति का साक्षात्कार किया है। लोलप हरियो सुमेधसो, और जिन मेधावी आर्यों ने सभी आकांक्षाओं का त्याग किया है। वंदामि संगम नादरेण तं, मैं उस संग की सादर वंदना करता हूँ। पुण्यं मायं मम समुपद्रवा, माहुन्तु एतस्य प्रभाव सिद्धिया, मेरे पुण्य के प्रभाव से कोई क्लेश उत्पन्न न हो। तथागतो लोके उत्पन्न अरहं सम्मा संबुद्धो, इस लोक में तथागत सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए हैं। धम्मो च देशि उपसंनिको परिनिब्बानिको संबोधक सुगता पवेदितो, और सुगत भगवान बुद्ध ने ऐसा धर्म निश्चित किया है जो मुक्ति, परम शांति, निर्वाण और संबोधि का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। मयं तं जानामा, हम इस धर्म को सुनकर ऐसा समझे। जाति भी दुखा, जन्म दुख है, जरा भी दुखा, वृद्धावस्था भी दुख, मरणं भी दुःखं, मृत्यु भी दुःख, सुख परिदेव दुःख दो मनस्य पायासा भी दुःखा, सुख क्रंदन, शारीरिक और मानसिक पीड़ा और निराशा भी दुःख है।
अप्ये ही संप्रयोगो दुखो, अप्यो का साथ दुख है। प्रेयो दुखो, प्रियों का वियोग दुख है। यम पीच्छं न लभते तमपि दुःखम्, जो भी इच्छा करते हैं उसका प्राप्त न होना दुख है। संक्षिप्तेन पंच उपादान खंड दुःख, संक्षेप में पांचों तादात्म्य के खंड दुख है। सेतम अर्थात रूप उपादान खंडो, रूप खंड से तादात्म्य। वेदना उपादान खंडो, वेदना खंड से तादात्म्य। संज्ञा उपादान खंडो, संज्ञा खंड से तादात्म्य। संखार उपादान खंडो, संस्कार खंड से तादात्म्य। विज्ञान उपादान खंडो, इंद्रियों के विज्ञान खंड से तादात्म्य। ये संपरिज्ञाय धर्मान सुभगुराय बहुलं साधके विनेति, इनका संपूर्ण ज्ञान धारण करने के लिए भगवान ने बार बार अपने श्रावकों को इस प्रकार निर्देशित किया। एवं भावाचपनस्य भगवत सावकेषु अनुशासने बहुला प्रवर्तते, और भगवान ने अपने श्रावकों को बार बार आगे निर्देशित किया। रूपम अनित्यं, रूप अनित्य है। वेदना अनित्या, वेदना अनित्य है। संज्ञा अनित्या, संज्ञा अनित्य है। संखारा अनित्या, संस्कार अनित्य है। ज्ञानम अनित्यम, इंद्रियों का विज्ञान अनित्य है। रूपम अनित्या, रूप अनात्म है। वेदना अनित्या, वेदना अनात्म है। संज्ञा अनित्या, संज्ञा अनात्म है। संखारा अनित्या, संस्कार अनात्म है। विज्ञान अनित्या, इंद्रियों का विज्ञान अनात्म। सर्वे संखारा अनित्या, सारे संस्कार नित्य हैं। सर्वे ब्रह्म अनित्याति, सारे ही ब्रह्म आत्मा है। तेमयं वेत्ति नाम जातिया जरा मरणेन, हम सभी जन वृद्धावस्था मृत्यु शोके ही परिदेवे दो मनस्य ही उपायासे दुःखोत्थिना दुःख करेता। शोक, क्रंदन, शारीरिक और मानसिक पीड़ा, निराशा जैसे दुखों से पीड़ित और बंधे रहते हैं। अपेदनामिनस्य केवल दुःख खंडस्य अंत क्रिया पन्यायेताति, आए हम सब सारे दुख खंड का अंत करने का संकल्प करें। श्री परिनिब्बुतं चितं भगवन्तं शरणं गता धम्मं च संघं च, हम भगवान जो बहुत समय पहले परिनिर्वाण को प्राप्त हुए एवं उनके धर्म और संघ की शरण में गए हैं। तस्य भगवतो सास यथा सती यथा बलं मनसि करोमा अनुपति पजामा, उन भगवान की शिक्षा का हम मन लगाकर यथासयोगता यथाशक्ति पालन करते हैं। सासनोपटिपति हिमस्य केवलस्य दुःख अंत क्रियाया संवर्ततु, और इस मार्ग का प्रतिपादन हमें हर प्रकार के दुखों के अंत की ओर ले जाए। ब्रह्मा च लोकाधिपति नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा, नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा,
Namo tassam bhagavato arahato samma sambuddhasam buddhang dhammang sanghang gunutarang upacchayang namasami. So, good morning, everyone. And, we have a whole day together. Sometimes, when I begin to give a talk, teachings, it feels like there's nothing left to say, everything's already been said. And then by the time it's getting towards the end of the teaching, I feel I've hardly touched upon all the things that I'd like to say. कि जब वो देशना शुरू करते हैं तो उनको लगता है कई बार कि जो कुछ भी कहना था वो सब कह चुके हैं, और जब देशना समाप्त होने का समय आता है तो लगता है कि अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है. So I would like to begin by making a few general observations. And one is that I like to divide the world's religious traditions into families, and the family of religions that grew up in the Middle East can be grouped together on the basis that they are essentially belief systems. So to become a member of one of those religions, you have to sign up for certain dogmas and beliefs. If you can, then you will be accepted into that religion. If you cannot, then you will never be a true member of that religion. So due to the ascendancy and the power of the Western world and countries that are for the most part affiliated with these belief system kind of religions, it's come to be accepted that religion means believing in things. So you may be asked, oh, you're a Buddhist, what do you believe in? So the idea is that religions differ simply in the objects of devotion, objects of faith. आप कह रहे हैं कि आज का प्रवचन वो कुछ जनरल बातों से कहना चाहेंगे. जो भी संसार में धर्म है इस समय, उनको कुछ ग्रुप्स में बांटा जाता है, कुछ फैमिलीज में बांटा जा सकता है. कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो कि मिडिल ईस्ट में उत्पन्न हुए और वहाँ पर पले और फले हैं. और उनका मुख्य सामान्य बिंदु ये है कि वो एक विश्वास की बात है, कि एक बिलीफ सिस्टम है. और अगर आप उन विश्वासों में, उनके जो विश्वास हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनमें अगर आप विश्वास रखते हैं तो आप उनके सदस्य, उस धर्म के सदस्य बन सकते हैं. अगर नहीं तो फिर आप उसमें नहीं एक्सेप्ट हो सकते. और बता रहे हैं कि जैसे पश्चिम में पाश्चात्य जगत की जैसे शक्ति बढ़ी और वो विमान हुआ, तो इस तरह के
बात फैल गई कि कोई भी जो रिलीजन है उसका मतलब है कोई ना एक विश्वास, कोई ना कोई एक मान्यता होगी। और सामान्यतः अब ये माना जाता है कि हर धर्म में फर्क, विभिन्न धर्मों में फर्क ये है कि उनकी मान्यताएं अलग अलग हैं। तो इसलिए अगर आप किसी को कहेंगे कि हम बुद्धिस्ट हैं या भगवान बुद्ध की शिक्षा मान करते हैं, तो आपसे पूछेंगे कि आप किस बात में विश्वास करते हैं। तो धर्म का पर्याय जो है विश्वास हो गया है, एक मान्यता हो गई है। Whereas I would propose that the religions that grew up in India, and specifically for our discussion Buddhism, are not belief systems, that Buddhism is essentially an education system. So it's a very different idea of what a religion is or could be. The difference between a belief system and an education system. आप ये बता रहे हैं कि जो भारत में जिस तरह के धर्म या संप्रदाय बड़े, उनकी एक खास बात यह है, और खास तौर पे बुद्धिस्ट विश्वास की जो बात कही जाती है वो एक कोई विश्वास या मान्यता नहीं है, वो एक तरह का शिक्षण पद्धति है, एक एजुकेशन सिस्टम है। So the question might arise, well then, as Buddhists, what role does faith play? How important is faith? What kind of faith do we need as Buddhists? तो ये प्रश्न सामान्यतः उठता है कि विश्वास या मान्यता से क्या परेशानी है, और बुद्धिस्ट होने के नाते हमें किस तरह की मान्यता या विश्वास रखना चाहिए। In the texts, the answer to this, the first part of the answer, is we have faith in the Buddha's enlightenment. इस प्रश्न का उत्तर जो ग्रंथों में मिलता है कि हमें विश्वास है भगवान की संबोधि पे, भगवान सम्यक संबोध हुए थे। And we have to acknowledge, of course, that we have no way of proving what did or did not take place under the Bodhi tree in Bodh Gaya almost 2,600 years ago. और हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है ये सिद्ध करने का कि बोधि वृक्ष के नीचे आज से 2600 वर्ष पहले क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। But when we consider the Buddha's enlightenment, we are considering the transformation of a human being into a Buddha. And looked at in this way, we can appreciate that the Bodhisattva, Prince Siddhartha, was a representative of the human race. Before his enlightenment, he was a human being. We can say he's a very special human being, but he was still a human being. So when we can say he was a representative, he proved through his enlightenment the human capacity for enlightenment. So this is our essential faith. Our faith is in the human capacity for enlightenment. आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि हम जब भगवान की संबोधि के बारे में विचार करते हैं तो उसको इस तरह से परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि वो एक मानव का बुद्ध बनने में संबोधि प्राप्त करने का जो चेन बदलाव हुआ उसके बारे में है। और इस तरह से हम उसको देखते हैं तो हम ये अप्रिशिएट कर सकते हैं इसको कि भगवान ने एक
बोधिसत्व जो थे राजकुमार सिद्धार्थ, वो अपने एफर्ट से एक संबोधि उन्होंने प्राप्त की। वो हम कह सकते हैं कि एक विशिष्ट व्यक्ति थे, लेकिन थे बेसिकली एक मानव थे, और वो उनका ये संबोधि प्राप्त करना ये दर्शाता है कि एक मानव में इस तरह की कैपेसिटी है कि वो बुद्ध बन सके। But the next and the crucial stage of this investigation is what we call anagarika, is we bringing it inwards, and the logical conclusion from our belief in the human capacity for enlightenment is our belief in our own capacity for enlightenment. और फिर इसी बात को जब आगे बढ़ाते हैं तो हम जो धर्म के गुणों में औपनायिकों की बात करते हैं कि अंतर्मुखी, अंदर की ओर ले जाता है, तो हम इससे एक निष्कर्ष निकालते हैं कि ये हमारे को हर प्राणी के अंदर जो एक क्षमता है इस तरह की, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। So this is the bridge between a belief in something that happened 2,600 years ago and how we live our life today. Because if we believe in the enlightenment of the Buddha, we believe in the capacity of human beings for enlightenment, we believe in our own capacity for enlightenment. So how can we look at that in a more practical way? Well, we can say that we believe that we have the capacity to abandon the unwholesome, to develop the wholesome, and to purify our minds. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इस धारणा का जो एक तरह का पुल बनाता है, इस विश्वास में कि 2600 वर्ष पहले कुछ घटना घटी और उससे हमको प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से हम अपना जीवन आज जी सकते हैं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि भगवान बुद्ध जो सम्यक संबोधि प्राप्त हुई थी, तो इसका मतलब हम इस पर भी विश्वास करते हैं कि हर मानव में वो क्षमता है कि वो अपने को दुख मुक्त कर सके। और इसको एक प्रैक्टिकल नजरिए से देखें तो हम इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम अपने आप को अकुशल वृत्तियों से मुक्त कर सकते हैं, कुशल वृत्तियां बढ़ा सकते हैं और चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। So from this point of view, we can say that there's no such thing as a non-practicing Buddhist, because to be Buddhist means to practice. Because if you believe that you can abandon the wholesome, then you must try to put it to the test. Can you? You believe that you can develop the wholesome, well then you have to try to see whether or not what you believe in is true. And if you believe that you can purify your heart, then you have to try to do that. This is why in the Buddha's teaching, faith or saddha always leads to virya or effort. So this is the test of your faith. The test of your faith is your effort. इस परिप्रेक्ष्य में जब हम समझते हैं तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ये कहना कि कोई बुद्धिस्ट है और वो साधना नहीं करता, तो ऐसी चीज नहीं हो सकती, ये विरोधाभास होगा। क्योंकि अगर हम ये विश्वास करते हैं कि हम अकुशल वृत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं तो हमको ये करना चाहिए।
हम ये मानते हैं कि कुशल प्रवृत्तियां हम अपनी बढ़ा सकते हैं तो हमको अभ्यास करके बढ़ानी चाहिए। हम ये मानते हैं कि हम अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं तो हमको वेरीफाई करना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए अपने साधना से। तो इस तरह से सचमुच में क्या हमारे में धर्म के प्रति श्रद्धा है, उसका टेस्ट यही है कि वो हमको वीर्य दे, हमारे के अंदर क्षमता दे कि हम इन बातों को अपने जीवन में उतार सकें। So we could say that at the time of the Buddha, it was a golden age for religion. The variety and the diversity of religious traditions, and particularly in the samana groups, was remarkable. And it was common for religious seekers to try to pigeonhole particular teachers, which category, which school they belong to. And there was a set of 10 questions that they would ask these teachers in order to determine which group they belong to. And the Buddha would always refuse to answer these questions. But on one occasion, in his own analysis of the different philosophical beliefs at that time, he was critical of 3 underlying wrong views which he felt were very damaging or restrictive. One was the belief that everything is determined by God, that there is a God who is a creator, who rewards and punishes people for whatever they do, and that human beings are basically the puppets and of the gods. And then he was critical of the idea that everything is already determined by our past actions. And the third belief is that everything is random. There is no causality. So in each of those cases, the main criteria for his criticism was that they prevent people putting forth effort or virya. If everything is decided by God, why put any effort into your life? If everything is decided by your past actions, why put any effort into your life? If everything is completely random, there is no predictable result of your actions, then why put any effort into your life? सामान्यतः उस भगवान बुद्ध के समय के बारे में अगर हम विचार करें तो हम पाते हैं कि उस समय बहुत सारे नाना प्रकार के सांप्रदायिक मान्यताएं थी और श्रमणों में भी बहुत सारी मान्यताएं थी। तो अजान के स्वर्णिम युग कहा जा सकता है मान्यताओं के बारे में। और ये वहाँ पे उस समय एक सामान्य बात रहती थी कि जो भी साधक होते थे वो जितने भी उस समय के आचार्य अवेलेबल थे उनको अलग अलग विभागों में बांटते थे कि ये इस स्कूल के हैं, ये इस स्कूल के हैं। और उसके लिए उन्होंने 10 तरह के 10 प्रश्न बनाए हुए थे जो हर एक से पूछा जाता था ताकि उस प्रश्नों के उत्तर के आधार पे उनको भाग एक डिसिप्लिन में बांटा जा सके। भगवान बुद्ध ने हमेशा इन तरह के प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर दिया था। एक समय जब उन्होंने अपनी एनालिसिस की थी जो उस समय के दार्शनिक सिद्धांत और मान्यताएं उपलब्ध थी, तो उसने उनमें से 3 जो मान्यताएं थी उनको जो मिथ्या दृष्टियां थी उनके बारे में खास तौर पर बताया। एक ये कि सब कुछ एक ईश्वरवाद है, जो बात है कि ईश्वर है जो कि हमारे सत्कर्मों को इनाम देता है, गलत काम करते हैं तो पनिशमेंट होती है। तो इस तरह से उस धारणा के अनुसार मानव जो है एक भगवान के हाथ की कठपुतली है, जो वो चाहे कर सकते हैं।
दूसरा भाग था, दूसरी जो मान्यताएं थी कि सब कुछ पहले से ही भाग्य भाव की बात है, जो बात है सब कुछ पहले से ही डिटर्मिन्ड है, फिक्स्ड है, जो होना है सब हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। और तीसरी बात थी कि सब कुछ अचानक हो जाता है, कोई उसका कारण नहीं है, कोई ये रैंडम फिनोमेना है संसार में, कोई किसी बात का कोई कारण नहीं होता। तो इन तीनों मान्यताओं को भगवान ने काफी क्रिटिसाइज किया। उनके मुख्य कारण क्रिटिसाइज का यही था कि अगर ये मान्यता मानते हैं तो आप जो हम मानव को साधना करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का कोई इंस्पिरेशन ही नहीं मिलता, क्योंकि अगर सब कुछ भगवान द्वारा निर्धारित है तो एफर्ट क्यों किया जाए, वीर्य की क्या जरूरत है। और अगर हमारा भाग्य ही है सब कुछ निर्धारित करता है तब भी वीर्य की कोई जरूरत नहीं, कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं। और अगर कोई सब कुछ एक रैंडमली होता है, किसी को घटना का कोई कारण नहीं है जो हम जान सके, तो भी आदमी ये सोचेगा, मनमाना ये सोचेगा कि हमें कोई प्रयत्न करने की, कोई वीर्य जगाने की आवश्यकता नहीं है। So the Buddha characterized his teaching. He said this is a Viryavada teaching. This is a teaching characterized by effort, characterized by the confidence that effort has meaning, that we create our life, we create our future through the quality of our actions. So so this is the other element of the faith that we have. We have faith in our capacity for enlightenment, and we have faith in the law of karma. We have faith in the importance, the significance of actions of body, speech, and mind. इन सब मान्यताओं के से भिन्न भगवान ने जो अपना मार्ग बताया उसको वीर्यवाद कहा, कि हमको अपने स्वयं के वीर्य से, पुरुषार्थ से ही आगे बढ़ सकते हैं धर्म के मार्ग पे, और कि मानव का पुरुषार्थ ही एक महत्वपूर्ण बात है। हम जो अपना जीवन है वो अपने पुरुषार्थ, अपने कर्मों से ही बनाते हैं। तो ये हमारी धारणा का एक अलग, एक दूसरा पक्ष है कि हम कर्म सिद्धांत को मानते हैं कि कर्मों के आधार पर हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। The Buddha said that when we have this firmly and wisely established faith, and we are putting forth consistent effort to test the things that we believe in, then mindfulness will arise. So faith and effort are considered to be the conditions, necessary conditions for rising of right mindfulness. भगवान समझाते थे कि जो इस बात में, जो कर्म के प्रभाव सिद्धांत में जो बात है विश्वास, तो उस विश्वास के आधार पे हम वीर्य जगाते हैं, एफर्ट करते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है उसके लिए, और उस एफर्ट के आधार पे ही सती जो है हमारी सजगता जगती है। तो सती के लिए ये श्रद्धा और वीर्य एक आवश्यक उसके बैक कॉज है। So when we are developing mindfulness, which is based upon sattva and virya, then samadhi will arise. जब हम श्रद्धा और वीर्य के आधार पे सती का भावना करते हैं, सती बढ़ाते हैं, तो समाधि भी हमारी पुष्ट होती है। So we can say that samadhi is the unbroken stream of mindfulness. When mindfulness is sustained without interruption, then the mind becomes stable and clear and bright. This is a samadhi. आप समझा रहे हैं कि जब हमारी सजगता निरंतर बनी रहती है, बीच में टूटती नहीं है, तो उसी को समाधि कहते हैं। और अगर सजगता हमारी बनी रहती है तो चित्त
प्रसन्न होता है, ब्राइट हो जाता है, रेडियंट होता है और समाहित हो जाता है, तो समाहित चित्त की को ही समाधि की बात कही जाती है. So I think in talking about samadhi, there's been too much emphasis on the term ekaggata, which is usually translated as one-pointedness. And so when you say one-pointed, it gives a particular kind of idea about samadhi. But one of the ways that Ajahn Chah described ekaggata in relation to the other mental factors present in samadhi is that ekaggata is like a plate on which the other factors are like fruits. So it's a harmonizing, unifying factor rather than a very single pointed focus. So the state of samadhi itself is one of stability and clarity. अजान आगे बता रहे हैं कि समाधि की जो परिभाषाएं उपलब्ध हैं उनमें कई बार एकाग्रता का जो मेंटल फैक्टर है चेतसिक है उसको बहुत महत्व दिया जाता है. एकाग्रता मतलब एक तरफ एक चित्त को एक आयाम पे लगाना, एक ऑब्जेक्ट पे लगाना, वो एक विचार है जो काफी प्रचलित है. लेकिन बताते हैं कि अजान चाह जो एकाग्रता के बारे में बताते थे कि वो एक तरह से हार्मोनाइजिंग फैक्टर है, जो बाकी जो समाधि के जो बाकी फैक्टर्स हैं उन सबको जोड़ के रखने वाला फैक्टर है. और एकाग्रता का मतलब इस सेंस में नहीं है कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे आरंभन पे ध्यान लगा के रखें, परंतु ये है कि हमारा चित्त समाहित हो और स्टेबल हो, स्पष्ट हो, समाहित हो. So when samadhi is the result of a consistent, unbroken stream of mindfulness, which is in itself based upon effort and faith, correctly established faith, then we are creating conditions for wisdom. जो हमारी समाधि सती की निरंतरता पे आधारित है और सती वीर्य और श्रद्धा के ऊपर आधारित है, तो हम प्रज्ञा के पुष्ट होने की कंडीशंस पैदा करते हैं. So one or two analogies for the relationship between samadhi and panya. One is that of the candle in the wind. With the wind blowing, the candle flame stutters, and if we want to examine anything very closely and carefully, then the inconstancy of the light will will make that very difficult. If we remove the candle flame from the wind, the candle flame becomes still and bright, and we can use the light of that flame to investigate anything very closely and precisely. So the samadhi is the flame and the wisdom is the examination. इसके लिए जो दृष्टांत दिए जाते हैं, एनालॉजी दी जाती है समाधि और प्रज्ञा को समझने के लिए. तो जैसे एक मोमबत्ती चल रही है और अगर हवा तेज चल रही है तो उसकी जो मोमबत्ती की जो लाइट है वो फ्लिकर करती है, हिलती हुलती रहती है. ऐसे फ्लिकरिंग लाइट के अंदर अगर हम कुछ चीज गहराई से देखना चाहें तो स्पष्टता से देख नहीं पाते हैं. अगर उसी कैंडल को, उसी मोमबत्ती को एक ऐसी जगह ले जाएं जहां हवा नहीं है तो उसकी रोशनी साफ स्पष्ट दिखाई देती है और उस स्पष्ट रोशनी में हमको जैसा कुछ है वो साफ दिखाई देता है. तो हम उस स्पष्ट रोशनी से इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं. तो इस तरह से जो समाधि और प्रज्ञा का रिलेशनशिप समझाया गया है. So another more modern analogy would be of surgery. So before we had the advantage of anesthesia,
surgery was very primitive, and the patient had to be held down or maybe given alcohol or something just to keep them reasonably still. But surgery could never develop to any great degree as long as the patient was conscious of pain and reacting to the surgeon's incisions. With anesthetics, then long operations in which the body is completely still became possible. So the mind, now we're looking like the patient, and samadhi is like the anesthetic, that which anesthetizes the mind. But what is specific here we find in the Satipatthana Sutta, its qualities abhijja domanassa. And abhijja domanassa are the whole spectrum of reaction to experience in which the mind either moves towards or withdraws. So in any pleasant experience, the habit, the instinct is to move towards the pleasant. And whenever there's anything that's slightly experienced as unpleasant, the mind instinctively moves back. And this moving towards the pleasant and moving away from the unpleasant can go from very coarse, just wincing at some kind of pain or moving towards the pleasant, to very slight, subtle movement in the mind. And as long as there is that subtle movement towards and away from phenomena, then the vipassana, the wisdom, cannot take place. So the samadhi is that which removes that tendency of reaction to phenomena, in the same way as the anesthetic removes the patient's experience of sensation. And then the analysis of phenomena, being able to see the arising and passing away according to causes and conditions, becomes possible in a very profound way. So this is another analogy for the relationship between samadhi and panya. एक और उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं समाधि और प्रज्ञा का क्या आपसी संबंध है, कि जो सर्जरी होती है, शल्य चिकित्सा होती है, जो एनेस्थेटिक्स थे उसके जब तक एनेस्थेटिक्स नहीं आए थे तो सर्जरी में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाए थे, क्योंकि पेशेंट को कुछ भी चीर फाड़ करने से दर्द होता था तो वो उसको सहन नहीं कर पाने से स्थिर नहीं रह पाता था और पेशेंट को पकड़ के रखना पड़ता था, तभी सर्जरी हो पाती थी। इस कारण से जब तक ये एनेस्थेसिक नहीं आया जो कॉन्शियसनेस को रिलीव करने के लिए, तब तक ये सर्जरी में भी डेवलपमेंट नहीं हुई। और जब एनेस्थीसिया आ गए थे तो उसके बाद, क्योंकि जो बीमार है उसका शरीर स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं है, तो लंबे समय तक के भी सर्जरी, लंबे समय के ऑपरेशन भी हो सकते थे। तो अजान कहते हैं कि समाधि जो है एक तरह से एनेस्थेटिक का काम करता है, ताकि हमारा चित्त स्थिर हो जाए और फिर हम ठीक से जो भी घटना घट रही है उसको देख सकें। आपने बताया कि सतिपट्ठान सूत्र में बात आती है जो निवरण की, तो उसमें अविद्या और दोमनस्य, दो मुख्य निवरण की बात आती है। तो उनको आप कह रहे हैं कि जैसे जो भी हमें अनुभव हो रहा है उसको हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसमें सारा स्पेक्ट्रम इन दो चीजों में आता है। सामान्यतः कोई चीज प्रिय लगती है तो हमारा मन उसकी तरफ खिंचता चला जाता है, कोई अप्रिय लगती है तो उससे दूर भागने की कोशिश करता है। तो और उसका पूरा रेंज है फ्रॉम ग्रॉस टू सटल, कि बहुत थोड़ा सा रिएक्शन है या बहुत ज्यादा रिएक्शन है। लेकिन जब तक भी प्रतिक्रिया है, जो एक्सपीरियंस है उसके प्रति, तब तक विपश्यना ठीक से नहीं हो पाती। और इसीलिए समाधि जो है वो उस तरह की प्रतिक्रिया को रोक कर हमको ठीक से विपश्यना करना, मतलब ठीक से हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक से जो भी अनुभव हो रहा है उसको एनालाइज कर सकते हैं। और इस तरह से ये इन दोनों का आपस का संबंध है कि समाधि जो है आधार बनती है हमारी विपश्यना करने की, एनालिसिस की।
ताकि हम उसका उदय और व्यय ठीक से देख पाए. So these 5 qualities, sattha, viriya, sati, samadhi and panya, are called the 5 indriyas, or the 5 balas, the 5 faculties, spiritual faculties, the 5 spiritual powers. And an important point to remember in the study of the Buddha's teachings is that we always have to be looking in terms of context. The Buddha never taught single virtues. He always explained how they are embedded in the whole context and the whole matrix of practice. And this is very helpful for understanding how to develop. For instance, if there is a weakness of mindfulness, then we can look at the 2 preceding factors as possible causes. If there is a weakness of sati, then there is a weakness of effort, or a lack or a weakness of faith, and we can try to increase those the power of those qualities in order to increase the power of mindfulness. ये जो 5 गुण बताए गए, श्रद्धा, वीर्य, सति, समाधि और प्रज्ञा, इनकी 5 इंद्रियां भी कहा जाता है, 5 बल कहा जाता है. एक महत्वपूर्ण बात जो भगवान की शिक्षा की है कि हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट में होती थी, किसी परिप्रेक्ष्य में होती थी, स्टैंड अलोन नहीं होती थी. तो क्योंकि वो हमारा जो साधना का पूरा मैट्रिक्स है, जो वाटिका है, उसमें एम्बेडेड रहती थी. इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इसको ठीक से समझें कि किस तरह से हमको ये गुण डेवलप करने चाहिए. उदाहरण के रूप में अगर हमारी सती कमजोर है तो उसके पहले के जो 2 फैक्टर्स हैं, श्रद्धा और वीर्य, हमें उसको देखना चाहिए. क्योंकि अगर हमारे वीर्य में कमी है तो समाधि या सती पुष्ट नहीं होगी, और श्रद्धा में भी कमी है तो भी सती पुष्ट नहीं होगी. So another way of looking at these 5 factors is of like a seesaw with a fulcrum in the middle, with mindfulness or sati is in the middle, and at the 2 ends you have faith or sattha and panya. So the idea is that faith and wisdom need to balance each other, and the balancing factor is mindfulness in the middle. And virya and effort and samadhi have to balance each other, again with mindfulness as the fulcrum in the middle. एक और दृष्टिकोण से हम इसको देख सकते हैं, जैसे सीसा जो होता है उसके दृष्टिकोण से. जो सती है वो एक तरह से उसका फलक्रम है, मुख्य बिंदु, सेंटर बिंदु है, जो कि सीसा का फिक्स रहता है, जो हिलता नहीं है. और 2 उसके जो कोने हैं, एक कोने में श्रद्धा है और एक कोने में प्रज्ञा है. और श्रद्धा और प्रज्ञा को बैलेंस करना चाहिए हमको, और सती जो फलक्रम पे है वो उसको बैलेंस करने में मदद करती है, उसको समन्वित करने में मदद करती है. इसी तरह से वीर्य और समाधि को भी बैलेंस करना है, और वो काम भी सती से होगा. सजगता से योगा में पता चलेगा कि ये बैलेंस नहीं है, कि हम प्रयास करेंगे उनको बैलेंस करने का. So in going back to point I made at the beginning of the talk, in the belief system, religions, faith is the main virtue, and the more faith you have, the better. There's no such thing as too much faith in these religious traditions. In Buddha Dhamma, faith is seen within the context of the overall education and training process, and faith has to be balanced by wisdom faculty. When faith lacks that wisdom faculty, it very easily becomes superstition or fanaticism. So here the wisdom faculty is the critical faculty,
But the wisdom faculty or the intelligence is also needs to be balanced by faith. So maybe this is a little bit more difficult to understand. But there's an interesting phenomena that I don't know when you were growing up or you ever watched Star Trek. You know this Mr. Spock. You know he's like 100% rational mind, and he's contrasted with the captain who tend to be very kind of emotional, and so the idea is that if you had like this 100% rational mind, you'd always make the best decisions. You know, but there are a number of people who have been involved in car accidents in which that area of the brain responsible for emotion has been destroyed or has been seriously compromised. And so these poor people become like Mr. Spock. They have this like pure rationality. So it is interesting to see how they function in the world. And they do very badly because they have no focus. They have no ability to decide exactly in which areas to make use of their rational powers. So, for instance, they could go to a supermarket and see 10 or 20 different brands of toothpaste and then spend hours just deciding between all the different brands of toothpaste on a rational basis. So when you look at your life, in fact, we're not as rational as we like to think, and quite a lot of times we're using our feelings and our emotion as a way of just saving time and deciding where we want to put our effort. So this is the function, one of the functions of sattva and how it works with wisdom. So sattva says, there are so many things I could put my time into. There are so many possible things to do, but I will choose this. This is where I make my commitment. So this is our ability to think and to reflect and to contemplate. And so on. It's endless. But faith is what says, we'll just concentrate, we'll focus just on this one thing. So this is why the faith and the critical faculty, the intelligence of the mind also need to be balanced. So was that too long? No, just seeing where to start. तो जैसे अभी जो बैलेंस करने की फैकल्टीज को बात बता रहे थे अजान, तो उस संदर्भ में बता रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसमें जो भेद है बाकियों से ये है कि जो धर्म और मान्यता आधारित धर्म है उनमें कोई ऐसी बात नहीं आती कि ये बहुत ज़्यादा फेथ हो गया, लेकिन भगवान की जो शिक्षा है उसमें फेथ को भी एक फैक्टर देखा जाता है एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, शिक्षण के कॉन्टेक्स्ट में, और उसको बैलेंस करना पड़ता है प्रज्ञा के साथ। जबकि दूसरे जो मान्यता आधारित विश्वास आधारित धर्म है उनमें एक्सेस ऑफ फेथ नाम की बहुत ज़्यादा श्रद्धा हो गई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जबकि यहाँ पर श्रद्धा को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है हमारी क्रिटिकल फैकल्टी से। क्योंकि अगर उसको उससे प्रज्ञा से या समझदारी से बैलेंस नहीं करेंगे तो अंधविश्वास में बदल जाती है या फैनेटिसिज्म में बदल जाती है। तो इसलिए श्रद्धा को भी बैलेंस करने की बात आती है। इसी प्रकार से जो हमारी विजडम है या क्रिटिकल फैकल्टी है, हमारी बुद्धि है जो कि एनालाइज करके लॉजिकली समझना चाहती है, उसको भी श्रद्धा से बैलेंस करने की बात भगवान की शिक्षा में आती है। इसके लिए वो एक उदाहरण देते हैं कि जो स्टार ट्रेक मूवी थी उसमें
दो कैरेक्टर्स थे, एक जो थे वो बिल्कुल 100% लॉजिक के ऊपर ही काम करते थे, मिस्टर स्पॉक नाम से, एक तो जो उस शिप के कैप्टन थे वो इमोशनल थे, तो उनको डिसीजंस सारा कुछ परिप्रेक्ष्य सामने रख के करना पड़ता था। और तो उन्होंने बताया कि इस तरह की बातें ये केवल फिल्म की बात नहीं है, सामान्य जीवन में कई बार ऐसा देखा गया है, खासतौर पर उन लोगों के साथ जो कार एक्सीडेंट के कारण उनका ब्रेन का कुछ पोर्शन डैमेज हो जाता है, जो पोर्शन की इमोशंस को रेगुलेट करता है। तो जब वो पोर्शन ब्रेन का उस भाग जो कि हमारी फीलिंग्स को इमोशंस को रेगुलेट करता है वो डैमेज हो जाता है, तो वो इमोशनल फैकल्टी उनकी कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। तो जो फिल्म में मिस्टर स्पॉक दिखाया गया वैसे ही बन जाते हैं। तो वो देखा गया कि सामान्य जीवन में जब वो जीवन जीते हैं तो सामान्य छोटी छोटी बात पे भी डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि जो एबिलिटी है उनकी डिसाइड करने की वो एक वन साइडेड हो जाती है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि अगर सुपरमार्केट में जाएं और 10 तरह के ब्रांड हैं, तो किस केवल लॉजिक के आधार पर अगर डिसीजन करने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे फीलिंग्स और इमोशन के आधार पर डिसीजन लेते हैं तो तुरंत डिसीजन हो जाता है। तो क्योंकि उस आधार पर ये मालूम पड़ जाता है कि हमें अपना एफर्ट किस तरह लगाना चाहिए। तो श्रद्धा जो है ये संभव करती है हमारे को कि हम बहुत सारी पॉसिबिलिटी, जो लॉजिकली बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आती हैं रैशनैलिटी के हिसाब से, तो उनके अंदर कौन सा हमको किस बात को कितना महत्व देना है, वो बात हमारी इमोशनल मैच्योरिटी पे डेवलप होती है, जो कि श्रद्धा के आधार पे फिक्स होती है। तो क्योंकि रैशनैलिटी जो है, जो लॉजिक्स हैं वो तो एंडलेस है, उनकी कोई सीमा नहीं है, आप अनंत काल तक उनकी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन प्रति फाइनल डिसीजन लेने में श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। And so the other balancing function is between viriya and samadhi. The explanation being, if there is an excess of viriya and a lack of samadhi, it can easily lead to agitation. If there is an excess of samadhi and a lack of viriya, can lead to stagnation. इसी तरह से वीर्य और समाधि को भी बैलेंस करने की जरूरत है। अगर वीर्य की बहुलता हो जाए और समाधि ना हो तो चित्त बेचैन होने लगता है, और अगर समाधि की बहुलता है और वीर्य नहीं है तो स्थिरता आने लगती है, एक स्टैग्नेशन आने लगती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। As for mindfulness or sati, there is no need for some external balancing factor. The more mindfulness, the better. जहाँ तक सती का सवाल है, उसके लिए कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सती जितनी अधिक हो उतना अच्छा है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस तरह से। So this morning, this is a brief exposition of the Dhamma practice in terms of the 5 balas, 5 indriyas, and I would like to end the discourse at this point and invite any questions or topics of discussion. तो आप कह रहे हैं कि जो संक्षिप्त देशना आपने आजान ने दी 5 इंद्रियों और 5 बलों के बारे में, अगर इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। Ajahn, this is being telecast online. So if you give me permission, can I take some questions which are coming online? Online? Yeah. Okay. So we're online right now. Okay. Yeah. Oh, hello, everybody. So can I take some online questions? Yes. Okay. So there is a question online in which the person shared a Metta Bhavana video, which was very melodious. It had a lot of music, symphony, and very melodious. So he's asking, many Metta videos like this use music. Since the precept of not using music or not singing like lay people is only for monks, is it advisable for lay people to use such videos? There's no prohibition for someone keeping the 5 precepts. If you on a pusta day or at times during a retreat,
then 108 precepts makes that step, renouncing music. But particularly if the music is being used in a skillful way, music is something that promotes or stimulates emotion. And if the intent is to stimulate wholesome emotions which will help to cultivate metta, at least initially, then I think that is allowable. And so it is, we can say it is like a crutch or something that can be a useful accompaniment to development of metta in the early stage, but the meditator should seek to go beyond the music at one point and to be independent of the music. राजेश जी ने कहा कि कुछ प्रश्न ऑनलाइन आए हैं, तो उसकी परमिशन लिया जान से। मेरा पहला प्रश्न था कि जो मेत्ता भावना के बारे में कई वीडियोस अवेलेबल हैं जो बहुत मेलोडियस हैं, बहुत संगीतमय है, और उसमें संगीत भी होता है, तो क्या जो गृहस्थ लोग हैं जो क्या उनके लिए वो यूज करना ठीक है? क्योंकि शील में ये बात भी आती है कि हम नृत्य गीत वादित से दूर रहेंगे। तो अजान ने उत्तर दिया कि वो 5 शीलधारियों के लिए उस तरह का कोई प्रोहिबिशन नहीं है। जो लोग 8 शील लेते हैं उनके लिए ये बात कही जाती है। और जब हम उसको संगीत को स्किलफुली यूज करें, कुशल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो एक कुशल हमारे इमोशंस जाते हैं, अच्छी चित्त मनोभावनाएं जाती हैं। तो सामान्य गृहस्थों के लिए वो उसके ऊपर कोई प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए। हमें संगीत को एक क्रच की तरह समझना चाहिए, एक बैसाखी की तरह समझना चाहिए, जो कि यूजफुल है शुरू में, लेकिन अच्छे साधक को इस संगीत के आधार के से आगे बढ़ना चाहिए। जब हम किसी रिट्रीट में जाएं या 8 प्रीसेप्ट पे उपोषित पर हैं, तब जरूर म्यूजिक से हम दूर रहना चाहिए। So this is my question. Recently, we heard a news where a slum was kind of engulfed in fire, and around 200 families lost their homes. So my young 10-year-old daughter asked me a lot of questions on karma, and I tried to explain to her, but I wanted your view. The main questions were that why were their homes destroyed and why did they have to suffer a lot? And she could not see any reason why, because the maid which works for us is a very humble and very good-natured person, and her home was also destroyed. That was one question. The other was, how can suddenly 200 families lose their homes together? Is it a karma effect coming together at the same time? Yes, this is very difficult to understand, I think, for everyone. And I'm reminded of the case of the tsunami in Southeast Asia some years ago, where thousands of people lost their lives at the same time, not just hundreds, and from all around the world. So I think that as Buddhists, one of the things is always to acknowledge when we don't understand. We don't have to have it all worked out. We have a faith in the law of karma, and that karma played a part. Exactly how, we don't know. And we don't just want to dismiss things and write, oh, this was their karma, or their group karma, or we don't really know. But I would say that let's put that to one side, the religious, let's say, belief element, and let's say is, how can we prevent this from happening again? So the causes in the past life, and then we don't know, but we can say,
what took place in this that caused this situation in terms of the building materials, the behavior of the people, and is there such a way that we can try to prevent such a thing from happening in the future? And I think this is a far more fruitful path of investigation than trying to justify it in some way or to try to explain. Ajahn Chah, when he was asked about this kind of issue, he would say, "Why did this good person die?" Or why did and he would say, "Because they were born." Yeah, it's like it's as simple as that, So he said, almost half jokingly, he said, "It's so strange. When the baby is born, everybody is laughing, and when somebody dies, everybody cries." He said it should be the other way around. When someone cries, "Oh no, there's someone's born who's got to die sometime." So he wasn't being serious about this, but just saying, pointing out the sort of the incomplete and rather foolish way we have of thinking about things sometimes. But so I don't think we really need to go into all these questions. Why? There's no real answer that we can prove. But if we say, what are the causes and conditions that we can do something about, and that we can try to at least make this kind of terrible thing happen less in the future, I think this is. एक प्रश्न था, दूसरा प्रश्न कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक दिल्ली में स्लम में 200 परिवारों के अपने घर जल गए थे। तो उन घरों जिनमें जले थे उनमें से एक महिला इनके घर पर काम करती थी, तो उनकी बच्ची पूछती थी कि ऐसा क्यों हुआ, वो तो इतनी अच्छी महिला है, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा कैसे हो सकता है कि 200 परिवारों के एक समय इकट्ठे ही ऐसा कर्म आया जो सबके घर जल गए। तो आप उत्तर दे रहे हैं कि इस तरह की बातें जो हैं काफी मुश्किल हो जाती हैं समझनी, क्योंकि जैसे आपने कहा तो सुनामी का उदाहरण जिसमें लाखों लोग एक ही समय पे अलग अलग जगह पे देशों में करीब लाखों लोग मर गए थे। तो ऐसी परिस्थिति जो हमारे रैशनल माइंड में नहीं आ पाती, तो उसको हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा में हम ये कहें कि उसका सबका कर्म ऐसा था, और फिर कहें कि नहीं सबके उसी समय ऐसे कर्म थे, तो इस तरह की बात हम कोई प्रूव नहीं कर सकते। तो इसको एक तरफ रख देना चाहिए, हमको अन्यथा इस तरफ ध्यान देना चाहिए कैसे हम इस तरह की घटनाओं को भविष्य में होने से रोक सकते हैं। जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई हम सिद्ध नहीं कर सकते इस बात को कि पास्ट का क्या कारण था जिसके कारण ऐसा हुआ। और आप बता रहे हैं कि जब अजान चाह से इस तरह का प्रश्न पूछा जाता था कि ये आदमी तो इतना अच्छा था, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसे मर गया सडनली, तो उनका एक ही लाइन का उत्तर होता था कि क्योंकि वो पैदा हुआ था तो इसलिए मरेगा ही। तो ये जो अवश्यम भावी बात है कि जो पैदा होता है वो मरेगा ही, ये बात हालांकि वो हाफ जोक में मजाक के रूप में कहते थे, तो इस बात को और आगे बढ़ाते वो कई बार कहते थे कि उनको बड़ा अजीब लगता है कि जब कोई पैदा होता है तो हम खुशी मनाते हैं और मरता है तो रोते हैं, जबकि अगर हम विचार करें तो जब कोई पैदा होता है तो ये बात अवश्यम भावी हो जाती है कि वो कभी मरेगा, तो सचमुच में उस बात पे हमको दुख कर सकते हैं। तो एक नजरिया है हमको देखने का, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों का कोई हम परमानेंट सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे सकते, पर हमारा ध्यान उस तरफ जाए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। So I have a question about the nature of sankhara in the sense of will or volition, and I've been pondering about how to find a middle way between determinism and randomness without falling into self-view. And is this something that can be explained in words, or does it just have to be seen to be understood? Because I can't understand how it can either not be fully determined or not random and not come from impermanent self.
Yeah, without getting too technical, let me just quote one of my favorite teachings, is that one who has little or no mindfulness has few choices, and one who is mindful has many choices. So without getting into a sense of self, there's simply the observation that the more mindfulness there is, then the more ability we have to distinguish whether this is wholesome or unwholesome, appropriate, inappropriate, in harmony with our goals and aspirations, in conflict with our goals and aspirations. So mindfulness allows wise choices to be made. So the less mindful you are, the more you are basically determined by the past, and so there is a great deal of determinism, probably much more than most people would be comfortable accepting. But through the practice of the Eightfold Path, there is a window of opportunity given within this. So much is given, but there is this window, there is this small gap in which you can develop the capacity, or the capacity can be developed to make wise choices and actions. आपका प्रश्न था कि संखार के बारे में, खासतौर पर चेतना के बारे में, कि वो कहते हैं कि जो एक फैटलिस्टिक डिटर्मिनिज्म की बात है कि सब कुछ पहले ही पूर्व निर्धारित है, और दूसरा रैंडमनेस की बात है कि सब कुछ अकस्मात ही होता है। इन दोनों के बीच में कैसे हम कोई सामंजस्य बिठा सकते हैं, समझ नहीं आता, क्योंकि जब भी बिठाने की कोशिश करते हैं तो उसमें तबाव आने लगता है। तो ज्ञान का उत्तर था कि इस के लिए एक जो फेवरेट भगवान की टीचिंग है उसके बारे में उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि जिसमें सजगता होती है, सती होती है, और उसके सामने कई चॉइस होती हैं। अगर सती नहीं होती तो चॉइसेस बहुत कम रह जाती हैं, हम अपने वोल्यूशन हमारा फिक्स्ड हो जाता है। तो जो जितनी सजगता हमारी बढ़ती है, सती बढ़ती है, तो हमें एबिलिटी होती है कि हम कुशल और कुशल को देख सकें, उसमें सेलेक्ट कर सकें कि क्या हमको अपने जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, हमारे गोल्स हैं, उसके अनुसार कौन सी डायरेक्शन में हमें जाना है। और जितनी हमारी सती बढ़ती जाती है उतनी हम अधिक से अधिक एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम में आ जाते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। हमारे पूर्व संस्कारों से, हमारे पूर्व आदतों के आधार पर हम अपने डिसीजन लेते हैं। आपने ये भी ध्यान दिलाया कि हम ये कई बार एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन सत्य है कि हम काफी हद तक डिटरमिन्ड है अपने पूर्व संस्कारों के कारण से, हमारे एक्शंस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। और जब हम अष्टांगिक मार्ग को पूरी तरह डेवलप करते हैं तो वो एक एबिलिटी हमारे में आती है, एक रास्ता खुलता है हमारे लिए छोटा सा, जिसके माध्यम से कि हम अपनी सजगता बढ़ाकर कुशल और अकुशल का भेद करके धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। You began by talking about groups of religions, and I see a lot of people now have Buddha Dharma or other Eastern religions also as a personal religion, and even in the West, and monotheistic religions, as you said, also have had an influence on the systems of governance or the economic models we follow in terms of competition and all of that in the last few hundred years. Now, do you see this moving Buddhism or Buddha Dharma moving from being just a personal religion to also influencing the economic models and how governance happens? Because some of those conditions are a result of how those models work, and do you see that happening, or how? Well, I think that if we look at the growth and spread of Buddhism in the Western world over the past 50 years or more, it hasn't followed the traditional model
that we would have seen in previous centuries, and that the influence of Buddhism has been in non-Buddhist areas. There has been an effort to explain Buddhist principles in modern idiom, modern language, often because of a fear that these teachings would be rejected if they were identified with a particular religion. And so we can see a huge influence of Buddhism in all kinds of academic spheres and in business and in almost every area of life these days, often without many of the people being involved aware that these are Buddhist ideas, and they just become part of the mainstream culture now. So it's not, if we look at the number of people who identify as, yeah, I'm Buddhist, it's actually not so large, but the disproportionate effect on the way that the most intelligent and people think about life and think about society and culture. आपका प्रश्न था कि आपने जो संप्रदायों के विभिन्न गुटों की बात कही गई थी, ग्रुप्स की बात कही थी, तो उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि जो अभी पाश्चात्य देशों में कई लोगों ने जो पूर्वी देशों के रिलीजन थे, खासतौर से बुद्धिज्म की बात है, उसको भी अपना पर्सनल रिलीजन बनाया है। तो आपका विचार है कि जैसे जो मोनोथिस्टिक पुराने रिलीजन्स थे, उनमें उनका असर हमारे इकोनॉमिक्स पे भी, हमारी सिस्टम मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे भी काफ़ी असर पड़ता है कि किस तरह से गतिविधियाँ होंगी। तो आप पूछ रहे थे कि क्या भगवान की ये बुद्धिस्ट की टीचिंग का भी उस डायरेक्शन में असर हो रहा है, और क्या इनकी शिक्षा का भी असर, किस तरह का हम इकोनॉमिक मॉडल फॉलो कर रहे हैं, किस तरह की गवर्नेंस मॉडल होगा, उस पर भी हो रहा है। तो अजान का उत्तर था कि जो बुद्धिस्ट भगवान की शिक्षा पाश्चात्य देशों में गई है, वो ट्रेडिशनल जो मॉडल है उसको नहीं फॉलो करती रही है। उसका कोशिश यही रही है कि भगवान की शिक्षा को मॉडर्न लैंग्वेज में, इडियम में समझाया जाए, क्योंकि उससे एक आशंका थी कि अगर उसको एक रिलीजन के रूप में समझाया जाएगा तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस कारण से हालांकि ये देखा गया है कि उसका इन्फ्लुएंस जो है एकेडमिक्स में, बिजनेस में और कई बार क्षेत्रों में भी हुआ है, लेकिन कई बार लोगों को मालूम नहीं होता कि जो आइडियाज वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने एरिया में, वो भगवान बुद्ध की शिक्षा से ही प्रेरित हैं। ये मालूम ना होते हुए भी उनका असर होता रहता है। आप बता रहे हैं कि अभी जो अगर हम पूछें कि कितने लोग सचमुच में अपने को बुद्धिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो शायद ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन काफ़ी जो समझदार लोग हैं, जो क्रिटिकल माइंडेड हैं, वो भगवान की शिक्षा से ज़रूर प्रेरित हो रहे हैं। So that's a more kind of a positive take on what's occurred. On the other hand, I made the point that the Buddhist teachings can only be understood and correctly practiced when they are practiced in context within the whole holistic system of training that the Buddha laid down, the Eightfold Path. And in the West, then they're often they've just taken certain teachings out of context, and of course the most well known is the secularization of mindfulness teaching in the West. And so here we can see some very good things going on, but at the same time some worrying developments. For instance, in the corporate sphere, one common criticism is that companies can be using the language of mindfulness basically for their own ends, so telling you don't worry about working conditions and the correctness of what's going on, just be mindful and be at peace with what. So you can use the language of
of mindfulness to justify a passivity with regards to things that should be reformed or changed. And similarly, something which really has split the Buddhist communities in America is the legitimacy of teaching mindfulness to the armed forces. And one colonel, a female colonel, had written a paper saying that one of the problems on the battlefield is that the soldiers get stressed out, they stop eating, and their efficiency on the battlefield is reduced. And by teaching them mindfulness, then that would increase their efficiency. In other words, their ability to kill the other people. So to what extent is it legitimate to be teaching mindfulness in this situation? The counter argument is that thousands of young men are leaving the armed forces with severe mental problems. Since the Vietnam War, the number of suicides has exceeded the number of soldiers who die on the battlefield, and the majority of homeless people on the streets of America are people who are mentally damaged through their experiences in the armed forces. So it seems compassionate to be teaching these young people how to look after their minds. So this is like been a big debate. But and just an example of when you take certain teachings and practices and techniques out of the whole context of Buddha Dhamma, then you have an array of pros and cons. And इस प्रश्न के आगे उत्तर बढ़ाते हुए आपने बताया कि जो आपने उदाहरण पहले बात कही कि किस तरह से ट्रेडिशनल मॉडल ना फॉलो करने के लाभ हुए, तो एक उसका आयाम है। दूसरा आयाम भी है कि जब भगवान की शिक्षा को अपने कॉन्टेक्स्ट से हटा दिया जाता है, तो इस तरह की एक टेंडेंसी पश्चिमी देशों में देखी गई है। और सबसे उसका महत्वपूर्ण उदाहरण है जो माइंडफुलनेस के बारे में जो काफ़ी प्रचलित हुआ है पिछले कुछ दशकों में, और उसमें से भगवान बुद्ध का नाम हटा दिया गया, सेकुलराइज माइंडफुलनेस बना दी गई। तो उसके कुछ लाभ भी हुए हैं जो पहले बताया जैसे उन्होंने, कुछ उससे दिक्कतें भी हो रही हैं, खासतौर पर जैसे क्रिटिसिज्म हो रहे हैं कि जब ये कॉर्पोरेट सेक्टर में इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि भाई हमारे वर्कर जब थक जाते हैं तो उनको कहा जाए कि आप सजग रहो और अपना स्ट्रेस कम करके और काम करते रहो। तो उस तरह से जो वर्किंग कंडीशंस में चेंज होना चाहिए था उस सबको कोशिश न करते हुए माइंडफुलनेस को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि आप अपना जो कॉर्पोरेट गोल्स हैं, बेनिफिट प्रॉफिट्स हैं, वो बढ़ाते जाएं। आपने बताया कि इस समय एक आयाम जो बहुत डिस्कशन में है और बहुत डिबेट हो रही है कि क्या सैनिकों को भी साधना सिखानी चाहिए, माइंडफुलनेस की सीखनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आर्मी के कर्नल ने एक बाकायदा पेपर लिखा था जिसमें बताया था कि हमारे जो यंग सोल्जर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं आर्मी युद्ध भूमि में, तो उनको सक्रिय माइंडफुलनेस सिखानी चाहिए ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े। तो इसके कई इस बात के शिक्षा तरह की शिक्षा कई आयाम है। एक आयाम तो ये है कि हम उनकी मारक क्षमता बढ़ा रहे हैं कि वो सत्यवान बनेंगे तो आराम से लोगों को मार सकेंगे। और दूसरा उसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि हजारों जो सैनिक हैं वो स्ट्रेस के कारण जब वापस आते हैं तो मानसिक रोगी हो जाते हैं। और ये जैसे सर्वविदित बात है कि वियतनाम वार के बाद जो लोगों ने ट्रॉमा के कारण जो सुसाइड्स किए पैटर्न्स ने, उनका नंबर इतना ज़्यादा है जितना कि वार के अंदर वियतनाम वार में भी जो मरे थे उससे भी ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया है। और आप बता रहे थे कि इस समय जो बेघर लोग अमेरिका में है और दूसरे पाश्चात्य देशों में हैं उनमें अधिकतर वही हैं जो कि मानसिक रोगी हैं। तो इस बात को देखते हुए लगता है कि ये एक करुणा की बात है कि अगर उनको साधना सिखाएंगे तो स्ट्रेस पे नहीं आएंगे और मानसिक रोगी नहीं बनेंगे। तो हमारे भगवान की शिक्षा को कॉन्टेक्स्ट से निकालने के
इस तरह के परिणाम भी देखने आए हैं, और ये भी विषय वाद विवाद का विषय चलता रहा है. So yes, just one more point, and then we'll break for a period of meditation. So the Buddha, before he passed away, declared that he would not appoint any one monk to be his successor, and the Dhamma and the Vinaya would be the teacher in his stead. So we tend to forget how important the Vinaya is there. We talk about the Dhamma all the time, but not the Vinaya so much. And this has led to often the unfair criticism that Buddhism is too much focused on the internal, individual dimension and lacks teachings on the social side. Whereas in fact, if we look at the Buddha's words, it's not the case. And the Buddha gave great importance to Vinaya. So Vinaya here not meaning the rules of the monk, but means all the efforts we make to create laws and customs and agreements and conventions in communities in order to create the external conditions that most support the practice of Dhamma. So if you're living, for instance, if you're living in an area which is very unsafe, and there are a lot of robbers and violent people around, and you have small children going to school, even though you have all the teachings and all you have access to great teacher, you won't be very peaceful. You won't be able to practice very well. You're constantly worried about your safety, the safety of your family, and the Buddha obviously so wise. The Buddha recognized this and gave great importance to creating sense of safety and security. So one of the key stories is that of the one morning the Buddha used his psychic powers to see who in the surrounding area had the spiritual faculties, maturity of spiritual faculties to realize the Dhamma. And he became aware that there was a cattle herder many miles away who could realize the Dhamma. So the Buddha walked to this town where this man lived, and as he arrived, everyone was very excited, and all the local rich people and everyone came out to take care of the Buddha and to set out a place for him to teach. But he just sat quietly. He wouldn't teach because this one man, the cattle herder, one of his cows had run away. And he was chasing this cow through the countryside. And so this went on, and the people, why won't the Buddha give any teaching, and getting very restless. And eventually this man, he arrived. And the Buddha saw him and he said, please take this man away and give him something to eat. And then when he had something to eat, then he came and he listened to the Dhamma, and he realized the Dhamma. So the interesting point is not usually, considered to be like a major issue here, but that the Buddha felt that this person was so much parami that he could realize the Dhamma, but only if he had something to eat first. Okay? And this is important point. So the Buddha said that for us to develop in the Dhamma, we need a certain security regarding food, clothing, shelter, and medicine. And that it's in a Buddhist economy or a Buddhist culture, then this should be the main focus to give everybody this security in these four areas so that they have the necessary conditions to flourish in the Dhamma.
आज हमारा एक और महत्वपूर्ण आयाम पे ध्यान दिला रहे थे कि जब भगवान का वहाँ परिनिर्वाण हुआ तो उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि धर्म और विनय ही हमारे भविष्य को के संघ को चलाएंगे। और अब कह रहे हैं कि कई बार हम धर्म की चर्चा तो बहुत करते हैं और विनय को भूल जाते हैं, और ये बार बार क्रिटिसिज्म किया जाता है कि भगवान की शिक्षा जो है एक इंडिविजुअल पे फोकस करती है और उसमें सोशल एस्पेक्ट की बात नहीं आती, जबकि ये सत्य नहीं है। क्योंकि विनय का मतलब केवल ये नहीं कि भिक्षुओं के क्या नियम है, मतलब उसका मतलब है कि कम्युनिटीज की कैसे सामंजस्य बैठ सकता है, कैसे वो प्रसन्न रह सकते हैं, कैसे वो सेफ और सिक्योर रह सकते हैं। और ताकि सेफ और सिक्योरिटी का भी उद्देश्य है ताकि वो अपने धर्म की साधना कर सकें। तो जैसे वो समय भी कई ऐसे स्थान थे जहाँ बहुत डाकू रहते थे और वायलेंट लोग रहते थे, तो समझते थे कि जो बच्चे गृहस्थ लोग हैं इस बात से परेशान है कि बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ इतना अशांति हो तो भगवान ने पहचाना कि ये सब ऐसी स्थिति में धर्म के मार्ग पे भी आगे नहीं बढ़ सकते, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी होना बहुत आवश्यक है। इस बारे में एक महत्वपूर्ण दृष्टांत जो सूत्रों में आता है कि जैसे रोज की तरह भगवान सुबह साइकिक पावर से देखते थे कि कौन साधक है जिसकी फैकल्टीज मैच्योर हैं, जिसकी पारमी पुष्ट है और वो इस समय धर्म को समझ सकता है। तो उन्होंने उस समय देखा कि एक पशुपालक है जो बहुत दूर है, उसकी समय पक गया है। तो वहां जाके उसके गांव में शहर में गए और जब वहां पहुंचे तो लोकल लोग बहुत प्रसन्न हुए उनको देख के और उनके बैठने का बहुत इंतजाम वगैरह किया। और लेकिन भगवान बैठ के शासन पर वेट करते रहे, उन्होंने कोई प्रवचन नहीं दिया। तो लोग सोचते रहे कि प्रवचन क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि वेट कर रहे थे कि जो पशुपालक है वो उसकी गाय भाग गई थी और उनके पीछे जा रहा था और वेट कर रहे थे कब वो आएगा तो तब हम प्रवचन शुरू करेंगे। तो जब उसने गाय पकड़ ली फिर वो वापस आया तो उस समय भी उसके आता हुआ देख कर भगवान ने प्रवचन नहीं दिया, लेकिन लोगों से कहा कि पहले इसको कुछ खाने को दे दीजिए, उसके बाद फिर धर्म चर्चा होगी। क्योंकि वो समझते थे कि हालांकि उसकी पारमियां पुष्ट है लेकिन भूखे पेट होने से वो साधना ठीक से समझ नहीं पाएगा। तो ये बात हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है हमको कि धर्म के मार्ग को बढ़ने के लिए भी कुछ चीजें बहुत आवश्यक हैं। तो इसलिए 4 जो रिक्विजिट्स कहे जाते हैं, भोजन की, कपड़े की, घर एक छत की और दवाई की, ये 4 महत्वपूर्ण चीजें हर एक समाज के हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो अगर हम बुद्धिस्ट इकोनॉमी या कल्चर की बात करते हैं तो हमारा सारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि सब लोगों को ये 4 जीवन के आवश्यक जो चीजें हैं सबको उपलब्ध हो। क्योंकि और उपलब्ध इसलिए हो क्योंकि अगर जब ये उपलब्ध होंगी तभी वो धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। Okay. So, अनुमोदन। sorry? We'll do the अनुमोदन। अनुमोदना will do. Okay. अन्वयं धम्म कथाय साधु कारं ददामसे। साधु 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 अनुमोदना। So we have some few minutes to meditate together before the end of the meeting at 11, please. So the practice of meditation should not be seen as applying a technique in order to get something. But we can look at meditation as an exploration. So when we are in our daily life, then our mind tends to be jumping around a lot, and there are all kinds of
defilements and hindrances in the mind which are hard to recognize because there is so much going on. But when we practice meditation, we call formal meditation, then we go against the stream of the mind. We deliberately counter the habits of the mind. So we give the mind just one focus or one task. And this has the effect of provoking a reaction from the mind. And that reaction, whether it's agitation or sleepiness or the escape into thoughts of the past and present, this is part of the meditation. It doesn't mean that when this occurs you can't meditate or you're not meditating. But the function of the meditation, at least at the beginning, is to expose and illuminate what is usually going on in the mind, and to give us the opportunity to learn about our mind and learn how to train and educate the mind so as to free itself of these instincts and habits. We are in the formal meditation. We have an opportunity to explore the relationship between the mind and the body, how the posture of the body affects the mind, how mental states affect the body. We have the opportunity to explore the relationship between effort and relaxation. In meditation, we have a very efficient feedback system. If we put too much effort into the meditation without sufficient relaxation, we become tense, the breath is short and unnatural, the mind does not settle down and to become peaceful. If there's too much relaxation, not enough effort, then the mind can drift off, become sleepy, and be caught in the hindrances. So in every meditation we have these opportunities for exploration and learning. And if we see this as a learning process rather than an activity designed to gain something, to get something, then the right view will be established. And this morning, this is rather short period, but I want to invite everyone to practice a slight variation on the scanning that most of you are familiar with. In this practice, we divide the body into 4 areas. The first area is that which includes the head, the face, and the neck. So what I would like you to do is to be aware of the breath, the in-breath, the out-breath, while observing any phenomena that appear in this first area as
the inhalation takes place, what phenomena, what sensations are present in this area of the head, the face, and the neck. Next, exhalation. So maintaining that clarity and interest in this observation, not trying to create any sensation, simply to be awake and aware of whatever is present in this area of the felt body. Breathing in, breathing out, being aware of the sensations associated with which arise together with the inhalation and the exhalation in the second area of the body, which includes the shoulders, the arms, the hands and fingers. So as the breathing in, aware of whatever sensations arise, conditioned by that in-breath, and as we breathe out, observing without reaction, simply observing, awake to the sensations, the second area of the body, including the shoulders, arms, hands and fingers. Now we move on to the third area of the body, which is the torso. So the chest and the abdomen and the back, spine from the base of the neck all the way down to the coccyx. This whole area which we refer to as the torso, and the sensations associated with, conditioned by the in-breath, and those associated with, conditioned by the out-breath. So in the torso, this sense of expansion and contraction is very clear. So as we breathe in, just simply observing all and any sensation which arise naturally, dependent upon the in-breath, dependent upon the out-breath, and then the fourth area of the body, the whole lower part of the body, the hips, the bottom, the thighs, the knees, the calves, the ankles, toes, feet and toes. Again, breathing in, aware that you're breathing in, and aware of whatever sensation is present in the lower part of the body. And similarly with the exhalation, feeling sensations in the hips, the bottom, and the pressure on the floor, the legs,
the knees, the feet, the toes. Simply aware, sustaining that sense of bright interest, commitment to this observation. And lastly, the full body awareness, including all four areas. So from the top of the head to the tips of the toes, breathing in, being aware of whatever sensation that arises in consciousness in whatever part of the body. And as we exhale, aware of the exhalation and any sensation that arises at any part of the body without choosing, without focusing on any particular area. At this point, we can choose to repeat this process, returning from the all-body awareness, the fifth step, to the sense of the lower area of the body, breathing in, breathing out, step 4. To the sensations in the torso as we breathe in, breathe out. Sensations in the second area, the shoulders, arms, hands and fingers. And then the sensations in the first area, including the head, the face and the neck. And returning to the all-body awareness of any sensation arising in association with, conditioned by the inhalation and the exhalation. So that process can be repeated, can be slowed down, or can be speeded up. But when this 5-step observation is sufficient, then we choose one particular point on the body in which to observe the breath. That point can be at the tip of the nose, within the nostrils, in the throat, in the chest, in the abdomen, wherever the breath is perceived clearly and in a state of ease. Now the focus is on that one point, and the observer of the sensation of the breath acts as a gatekeeper, doesn't follow the breath into the body, doesn't follow it out, is simply aware at that one point of the sensation of the breath.
If the mind becomes sluggish or finds this difficult, then can reinvigorate the mind by observing the breath in the 4 areas and then the all-body awareness as the 5th point, before returning once more to the single point of attention.